there was a simple array question, and the second question was on dynamic programming, 2D dynamic programming. So like the array question was really easy. Yeah, and the dynamic programming was like I did recursion and then I did memorization on that. मैं अभी भी backbencher ही हूँ. I never sit at the front. Even in college, even in school, like till 10th, I used to score like really decent marks, like 70-75%. I wasn't. Hey guys, welcome back to the first episode of 2025. Hope you guys are doing well. Today I have Richa Rathi from Cummins College of Engineering for Women in Pune. And if I talk about her, she has secured two internships actually, well, Fargo's and Microsoft. I don't think those companies need any sort of introduction. And if you're someone that's been struggling with DSA, they're not able to pass the resume selections round, or they want to do an internship at a big firm, if you're from second year, third year, fourth year, no matter what kind of student you are, this video is a must watch for you, especially if you're struggling to be consistent and you aren't really getting where you want to get. So thank you so much, Richa, for sparing some time with me. So just to set things off, who is Richa Rathi? Like, just for the audience. Okay, that was a good intro and good confidence. I was like really surprised. So I don't like who am I? That's a good question. I haven't really thought about it. I think like every human being is a unique person and it's like really complex. Like to describe myself in like few words, it is. I think it is tough, but I would say like I am dedicated. Like for because like I was like really driven for my internship, and yes, I am a cheerful person or else. Yeah, I Okay. think you will get to know more about me by the end of this episode. Yeah. Okay. So, Richa, how were things back at home? Like, how was your early upbringing? Like, घर पे कैसा था सब? Like, when you were a child, like, what was the environment? What sort of student were you? Like, were you this typical nerdish front bencher, back bencher, middle bencher? Like, कैसा था सब? मैं अभी भी backbencher ही हूँ. I never sit at the front. Even in college, even in school, like till 10th, I used to score like really decent marks, like 70-75%. I wasn't a topper student at all. बस मैं 10th में like I studied इसलिए marks मिल गए थे. But like overall, I was a average student till college, I guess. Like अभी भी मैं backbencher ही हूँ, and like till like मेरा पूरा childhood मैंने कुछ like ऐसे नहीं किया आई हैव स्टडीड अलॉट और मैंने बहुत कुछ उखाड़ा है. मैं दिन में आई यूज्ड टू वॉच 1 to 2 hours टीवी. नीचे 1-2 घंटे खेलती थी. एंड व्हाट्स एंड या आई हैड लाइक फ्यू को करिकुलम्स, वो भी नॉट लाइक इट्स लाइक टॉप नॉच करिकुलम्स, जस्ट लाइक ड्राइंग एंड म्यूजिक क्लास, like random classes. That's it. So yeah, like I wasn't even quite active in my school. I don't think like I wasn't quite active in my school too. So yes. Okay. It was And my to hear upbringing, that. क्या It was what? nice to hear that because most of the people I talk Yes. to, like, हम लोग front bencher थे, used to be like the class topper. No, I was like chile sa mujhe like I never cared about my future when I was small till my 10th grade. And science ही मैंने क्यों लिया? Because like yeah, the only subjects I scored good was maths and drawing, the art class. That's it. So इसलिए मैंने science लिया था क्योंकि I liked maths and all of my other friends were taking science. Okay. Can you share the Yeah. perspective on कि like 10th के बाद ऐसा like did something happen, because you're saying like till 10th I wasn't really that good. Like, did something happen after that, or when you entered college ki like No, totally improved in like academically and all that? नहीं 10th like still 9th grade I was like really average student. 10th में boards था, so like parents से भी pressure आ गए थे कि आप पढ़ ले रिचा, तू कुछ पढ़ तो नहीं रही है. And they were like on top of me कि you should study. And मैंने 10th में finally like for the first time मैंने tuitions लगाए थे. And yes, 10th was pretty good, pretty chill, pretty fun. Like it was pretty happy. And 11th 12th was like again a downfall for me. Yeah, like I couldn't meet my expectations nor my parents expectations till like मेरे 12th के results से. So that wasn't quite good because of the lockdown and stuff. Yes, so like because of that disappointed, I was like really driven ki nahi. Uh, like college, I wasn't like really happy with my college and my branch because I always wanted to be a computer engineer, like IT field में ही. Cause मेरे family में everyone is an engineer, so automatically वो मुझ में भी engineering का ये आ गया था. Cause like why not? Like my father has a good life in engineering. He like engineers are paid well, and computer engineering was like kind of interesting for me. So करना तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही था, बट वही मतलब
college and branch was like really disappointing for me as well as my parents. So फिर तब से like I got driven कि नहीं, like I did get a setback, so I don't want that to happen again. So like Oh, that's how I started scoring well in college. hmm. Like I started focusing on my studies and DSA. Okay. So, guys, I haven't mentioned Richa is not from computer science background, which most people probably would have thought because so far we've mostly done podcasts with like people from computer science, IT, and all that. She's from ENTC, and she still managed to get like a really good. No offense to the ENTC folks. I'm just talking about previous podcasts where people mostly expect people from computer science to come in and sort of tell what they are doing right now. So, जैसे रिचा ने बोला, she really got motivated after failure in grade 12. Not failure, but she didn't get the sort of college that she was Not, looking into. yeah, not up to my expectations. Yeah. IIT नहीं मिला, like for most the people that don't end up in I, IIT. IIT नहीं, like वही NITs, triple ITs कुछ नहीं मिला. With the So, marks I got, not even Cummins computer science. So yeah. so that was a bit disappointing. But Richa probably learned a lot of lessons from that. That's why like she is here where she is. Because अभी 3 साल ही हुआ ना. She's in a third year currently. So in like 3 years she really evolved and like is doing fine now. Richa, what is a lesson that you learned over these 3 years in college? What is the most important thing that you learned overall, and how have you evolved as a person? Like ऐसा कुछ did you learn something that totally like change your trajectory, or like बहुत अभी तक help कर रहा है कि like ये मैंने lesson सीखा that is still helping me out? I would say firstly be consistent. Yeah, like I personally started coding before my college started. Yes, so be consistent. Second, keep good company around you, keep good friends around you. So like my friend circle in my college is like really positive, really happy and really motivating. So I would say keep a good company around you and be the good company as well for others. Yes, that's the main things I learned. Okay. And Richa, you're also maintaining a good CGPA in college. And like, what's the importance of that? Because half the people have that question: why does CGPA even matter? Which is giving a theory exam. Where will it really have some sort of importance? So, can you shed some light and give some perspective to the folks and how to manage all of this? Because karna to sabhi hai. Like, you can't just be like, "Ki, I'm just up Mm-hmm. and then screwing up in your exams." You can't really do that, right? So, how did you Yeah, manage yeah. like, all of this extracurriculars and then studies and then internships? Yes, so about CGPA, I would say maintain 8.5 CGPA plus 8.5 plus CGPA. Not like 9.0 is not necessary, but I think it gives the interviewer a good impact that she's like really consistent with her studies too, and in job too, she'll be consistent about it. And about maintaining the CGPA, I would like in first year I was like really what we say regular to my classes, so I attended all the classes और मैं class में ध्यान भी देती थी. So apparently I scored अच्छे in first year क्योंकि and first year was like comparatively easy too. And ऐसे नहीं कि मैं regularly पढ़ाई करती थी by my own. मैं एग्जाम के पहले ही पढ़ती थी, लेकिन फर्स्ट ईयर में कैसे आई यूज टू पे अटेंशन इन क्लासेस, बट इन सेकंड ईयर वो भी नहीं हो रहा था मुझसे पेइंग अटेंशन इन द क्लासेस. मतलब मुझे तो नींद ही आती थी क्लास में. सो आई यूज टू सिट ऐसे लास्ट बेंच पे एंड आई यूज टू स्लीप समटाइम्स, और डांट भी पड़ी है मुझे टीचर से काफी बार. सो नो बट आई थिंक कि बी स्मार्ट अबाउट हाउ यू स्टडी. मतलब एग्जाम के पहले ही पढ़ाई करो. आई वांट से कि कंटिन्यूसली पढ़ाई करो क्योंकि दैट्स व्हाट इट हेल्प्स मी. क्योंकि even if I start studying early, by the time of exam I would end up forgetting everything. Yeah. Yeah, so एग्जाम के पहले पढ़ना शुरू करो एंड मेक नोट्स एग्जाम के पहले ही. इवन दो यू नो यू नॉट गोना रिवाइज दोस नोट्स अगेन क्योंकि तुरंत अगले दिन एग्जाम है. तो रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलेगा, बट स्टिल एंड अप मेकिंग नोट्स. दैट्स लाइक बेटर. हाँ, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो. एंड फॉर फर्स्ट ईयर्स आई वुड से हाँ, पूरा पूरा अच्छे से पढ़ाई करो. फर्स्ट ईयर में तो मैंने No. फर्स्ट में काफी अच्छे से पढ़ाई की थी, बट नॉट इन सेकंड एंड थर्ड ईयर. लाइक अभी हमारे रिजल्ट्स आए सिक्स्थ फिफ्थ सेम के, तो लाइक आई डिड नॉट एंड अप स्कोरिंग रियली गुड इन सिक्स्थ इन फिफ्थ सेम. सो यस, एंड लाइक द टॉपिक्स यू नो, फॉर एग्जांपल डीएसए, oops, Hmm. डीबीएमएस या तो फिर ओएस, Hmm. व्हिच एंड्स अप हेल्पिंग इन योर इंटरव्यू टू. वो सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ लो तुम्हारे क्या बोलते सिलेबस में ही, तुम्हारे कॉलेज सिलेबस में ही. सो लाइक एंड लाइक स्टडी दो सब्जेक्ट्स रियली वेल सो दैट तुम्हें वो फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े. एंड उसके नोट्स तो अच्छे से बनाओ ही, क्योंकि सो दैट इट विल हेल्प यू फॉर लाइक रिवाइजिंग बिफोर द इंटरव्यूज और स्टफ. तो जो भी सब्जेक्ट्स विच यू थिंक इट विल हेल्प यू इन द इंटरव्यू एज वेल, लाइक स्टडी दो सब्जेक्ट्स रियली वेल.
Okay. Like for example, subjects like DSA, Hmm. OOPS, ML, maths, like those were like really scoring subjects for me. मतलब I always used to score ऐसे 90 plus in those subjects और बाकी में तो नहीं. Electronics से core subjects तो I never scored good in those subjects. Electronics के tough भी होते हैं थोड़ा, like we even had that a couple in I think our second year and first year. I didn't really score well in those subjects. And then I remembered Rancho and Chatur. Like in the first year, people are like Chatur. They sit on the first bench. They remember everything. They take notes and all that. जैसे you enter second year, you're like नहीं भाई Rancho ही बनते हैं. Let's get our internships and all. College तो चलता रहेगा. Exactly. नहीं, and मैंने फर्स्ट में क्यों पढ़ाई की थी बिकॉज आई वाज लाइक होपिंग फॉर ब्रांच चेंज, लेकिन वो हुआ तो नहीं. Okay. इसलिए तो आई स्टडीड इन फर्स्ट ईयर लाइक रियली रिगरसली. Hmm. But looking back, it एंड वो did नया नया. matter ना, because like you got in your internship in a CS company, so फर्क नहीं पड़ा like that you didn't get into computer. हाँ. You made up for Yes. that. And first year में we had like really good subjects. We had C language का पूरा like basics of C language and basics of programming की like loops, if else, for loops, while loops, सब कुछ था. Case, if मतलब case switch, case B. And in second year we had OOPS too. So I think like our curriculum was like really well designed. Hmm. But हमारे juniors का I don't think कि उनका इतना well designed है. So yes. क्योंकि Oh. like there is this NEP, right? New Education Policy, Hmm. जो अभी नया आया. हाँ नहीं आया हम्म. because they are weird subjects तो on. मुझे खुद से like मुझे पर्सनली इंटरेस्ट भी आ रहा था विद आवर करिकुलम. करिकुलम या. Okay. So you had mentioned that you had started like coding before college started, no? Ki you had started. हम्म. How did you like enter the coding world? Because like nowadays there's so many buzzwords. लोगों को सीधा AI, they want to make some AI agents, or I don't know, they want to jump in and make, I don't know, this new chat GPT. उनको robots बनाने हैं, उनको ML बनाना है. But then you're like, do you know coding? वो बोलेंगे नहीं, we don't know how to code. So like, how did you jump into, like, did you choose a specific language, and then how did you learn about it? And when did you jump into platforms like LeetCode and all that? हम्म. तो फिर my father, he's an engineer too, a computer engineer. So he pushed me into coding before my first year started. And like we actually saw कि first year का क्या क्या syllabus है. तो first sem में we had coding in C, right? तो फिर वो जो पूरा syllabus था of my first sem C का, तो वो मैंने अपने holidays में खत्म कर लिया था before like college Hmm. started. तो Hmm. मतलब मैंने घर पे I did like if else, for loop, while loop, Hmm. Correct. इतना ही किया था. Like basics of C. And then फिर कैसे like when I came to college I had like I had that upper hand कि मुझे आता था like जो भी syllabus में था. So फिर उसके बाद I started doing hacker rank. Hmm. Yes, in first year. तो फिर मैंने C का hacker rank solve करना शुरू किया. तो Okay. फिर मैंने C में 4 star almost like जो stars मिलते हैं ना in हाँ. hacker rank, so I completed 4 stars in C. And then फिर मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो था like which we call DSA, जो हमें पूछते हैं इसमें किसमें ओएस में. तो फिर वो आई स्टार्टेड सॉल्विंग, वो भी आई स्टार्टेड सॉल्विंग इन सी. अच्छा. Okay. और वो भी लाइक बेसिक कि लाइक एरेज, लूप्स, इफ एल्स केस, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट्स. तो वही लाइक आई डिड नॉट जंप डायरेक्टली इसे एकदम ऐसे एडवांस पे. हाँ. स्टार्टिंग से Hmm. स्टार्टिंग में इजी, एकदम इजी क्वेश्चंस करती थी मैं. या. एंड फिर सेकंड सेम में वी हैड जावा एज आवर सब्जेक्ट. उप्स. Correct. Hmm. तो फिर जब जावा आया था तब मैंने 5 स्टार वो जावा कंप्लीट किया था बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हैकर रैंक पे. Oh. एंड फिर मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आई स्विच्ड फ्रॉम सी टू जावा उसके बाद. एंड देन फिर मैं जावा में करने लगी डीएसए सॉल्व. सो Okay. बाय द स्टार्ट ऑफ सेकंड ईयर मैंने लाइक वो 5 स्टार जो बैचेस होते हैं वो मैंने जावा और इसका कंप्लीट कर दिया था प्रॉब्लम सॉल्विंग का. एंड आई कंप्लीटेड सी के से 4 स्टार क्योंकि मुझे आगे का नहीं आ रहा था सी लैंग्वेज. आई वाज लाइक डन विद सी. Okay. So when did you start LeetCode? Like, did you start doing LeetCode after second year? हाँ. Okay. No, I started lead coding in second year. It's okay. I started lead code in second year. And वही मतलब जैसे don't jump into difficult and medium problems एकदम तुरंत से. Hmm. First जो आपको आता है solve with that, right? तो अभी कॉलेज में क्या सिखाया है? If else सिखाया है, array सिखाया है, string सिखाया है. तो you solve those topics only in hacker rank and lead code. जो तुम्हें आता है like just don't skip those and do like Hmm. graphs, trees वगैरह. वो तुम्हें आएगा ही नहीं अगर तुमको ये नहीं आया. So like मैंने लीड कोड है. कमिंग बैक टू क्वेश्चन, मैंने लीड कोड शुरू किया था सेकंड ईयर में. यस. बाय द एंड ऑफ सेकंड ईयर मैंने अराउंड 150 क्वेश्चन सॉल्व किए थे.
Yes, and फिर we had 2 months of leave, right? छुट्टी थी ना, summer vacation. So in that, I solved around 350 questions in total of lead code. 200 questions in 2 months. 100 questions a month. That's pretty commendable. So, like looking at a broader perspective, like did that help you out? Because you mentioned that pehle you did the basics, right? You started off with strings, arrays, and things like that. So, looking at it from the current sort of time, do you feel that really helped you out even in the interviews and all, due to the fact that your basics were really strong? I would say because you'd done a lot of easy questions initially. Basic, like I would say, कि हाँ, quality of questions they do matter, but the number of questions you solve is like that should be counted to like how many questions have you solved. क्योंकि like if you solve too many basic questions, right, तुम्हें वो fundamental तो clear हो जाता है, and that Correct. basic से like array string से it will help you recursion, backtracking के लिए भी, Correct. right? Mhm. So मतलब and topic of questions की मैंने कब कौन से question solve किए थे? So yeah, first I started with array string, normal if else for loop से शुरू किया, right? फिर मैंने linked list सीखा. आई Hmm. थिंक मैंने लिंक लिस्ट भी सेकंड ईयर शुरू होने से पहले सीख लिया था, थैंक्स टू माय फादर अगेन. लाइक ही पूछड मी कि लिंक लिस्ट सीख ले तू. तो फिर हाँ, मैंने लिंक लिस्ट सीखा था, वो मैंने सी में ही सीखा था लिंक लिस्ट भी, लाइक वो स्ट्रक्चर बना के लिंक लिस्ट. एंड हमें यस 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 एंड हमें थर्ड सेमेस्टर में वी हैड डीएसए इन C2 जिसमें लिंक लिस्ट वगैरह सब कुछ था, अच्छा. ट्रीज एंड ग्राफ सब कुछ था. हाँ. यस, इन ईएनटीसी ब्रांच 2. तो फिर वो भी अच्छे से कर लो सॉल्व. एंड वही मतलब जो तुम्हें कंसेप्ट सिखा रहे हैं कॉलेज में, तुम वही सीखो मतलब इन डेप्थ घर पे जाके. लाइक डोंट ट्राई ऐसे मतलब कुछ और सीखने के लिए. पहले पहले लाइक लाइक जो करंट कंसेप्ट जब तुम पढ़ रहे हो उसको मास्टर कर लो, एंड देन फिर जंप टू नेक्स्ट कंसेप्ट. Okay. यस, Hmm. लाइक दैट्स व्हाट आई वुड से. मतलब जब तक तुम्हें वो हैंग नहीं मिलता क्वेश्चन का कि हाँ तुम मतलब वो क्वेश्चन नींद में नहीं सॉल्व कर पाते ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, तो लाइक तब तक सॉल्व करते ही रहो. तो आई Oh. थिंक मैंने अराउंड अराउंड ऐसे 500 क्वेश्चन तो सॉल्व किए होंगे अभी तक डीएसए के. Hmm. So like a good thing she हाँ mentioned मतलब कि वो नींद वाला ना कि like you have to be that good कि like अगर कोई नींद में भी उठा के पूछे you should be able to know the logic. That is when you understand. एटलीस्ट द बेसिक क्वेश्चंस. हाँ, okay. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग कि ऐसे ट्रीज या ग्राफ के लिए भी होना चाहिए, लेकिन स्ट्रिंग एरेज तो होना ही चाहिए, लिंक लिस्ट भी होना चाहिए ऐसा. Okay. If that's happening with क्योंकि trees, वही I think you can go with code forces or वो सब भी. Then you can go into competitive programming if you're that good. इतना तो अच्छा कंपनीज डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू बी. लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है इजी, लाइक जो लीड कोड इजी है ना, वो तुम्हें नींद में सॉल्व करना आना चाहिए. Okay. So like what resources यस. do you use? Like you mentioned कि college में चल रहा था सब. So like I studied during that time because there are a lot of resources, roadmaps, and now I think in the age of AI there's too much information, but no one's actually doing anything. They're just stuck with trying to find out what resource we should use, कैसे करना है. They're stuck in planning basically. They're overthinking कि like should I follow this? हाँ, So, like how did you avoid that and like actually do something? एग्जैक्टली. आई एम लाइक स्टार्ट विद समथिंग, राइट? तुम लोग रिसोर्सेस तुम्हें बाद में तुम लोग फिगर आउट खुद कर लोगे कि तुम्हें क्या रिसोर्स यूज करना है. फर्स्ट एटलीस्ट स्टार्ट विद एनी वन क्वेश्चन जो भी आता है लीड कोड पे. लाइक लीड कोड पे सबसे पहले कौन सा वो टू सम वाला क्वेश्चन है, तो लाइक एटलीस्ट स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन फर्स्ट. फिर तुम आगे जाओ ना, फिर तुम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करो. हाँ मतलब मैंने तो बाद पहले तो मैंने से लाइक रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करती थी कहाँ से भी. लाइक हाँ. लुक, व्हाट माय गोल वाज सबसे पहले कि मुझे हैकर रैंक का 5 स्टार चाहिए ही है. और फिर जो भी ऐसे इजी वाले क्वेश्चन थे ना हैकर रैंक के, मैंने वो सारे सॉल्व कर दिए थे वो चैप्टर. Correct. आई डिडंट कि कौन सा क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है. जो मुझे आता था स्ट्रिंग्स एंड एरे, मैंने उसके जो भी सारे इजी क्वेश्चंस थे हैकर रैंक पे, आई सॉल्व दैट. तो वही. एंड या इवन लाइक दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, राइट? कि हैश मैप्स, जिसमें हाँ. हैश मैप्स Anagram हैश और सेट लगते हैं, एरे लिस्ट लगते हाँ. हैं, दैट्स कलेक्शन फ्रेमवर्क वाले क्वेश्चंस. इवन गिव अटेंशन टू दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. मतलब मुझे वो स्विच करने में बहुत मुश्किल गया था फ्रॉम एरेज टू एरे लिस्ट एंड हैश मैप्स हाँ. को स्विच करने में. दोस कलेक्शन फ्रेमवर्क्स के जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज है ना जावा में, दोस रियली हेल्प यू टू सॉल्व डीएसए के क्वेश्चंस. And hash maps are really एंड important फिर because उसमें भी use होते हैं ना. Like later on they're used in many like in our sub array questions many times you have to use a hash map. Like initially you बहुत tough लगता है हाँ, C++, so you should have a good understanding कि like how we can exactly use that. What हैश was मैप्स एंड एरे लिस्ट आर रियली इंपॉर्टेंट. मतलब वो तो आना ही चाहिए फॉर एनी क्वेश्चन. मतलब it can like ease the like problem solving. हाँ, what was I saying कि अब कौन से टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट? मतलब यू कैन जस्ट टेक ऑन एरेज एंड स्ट्रिंग, जैसे मैंने
जैसे मैं अभी तो मैं बस एरेज और स्ट्रिंग्स पे ही फोकस कर रही थी, बट यू कैंट टिक ऑन इट, राइट? तो फिर व्हाट आई डिड कि देख, जो लीड कोड 75 वाले क्वेश्चंस है हाँ ना, हाँ तो उसपे टॉपिक्स दिए हुए, एरे, हाँ स्ट्रिंग, हाँ। फिर बैक ट्रैकिंग, ऐसे सारे टॉपिक्स दिए हुए। लाइक शुड डू यू वांट मी टू शेयर माय स्क्रीन, यू कैन शेयर लाइक योर, फॉर बेटर अंडर? yeah, that would be better because ऐसे हवा में बोलेंगे they won't understand what we're talking about. Sharing is not turned on. Okay. 1 second. I think you can share now. One minute. Yeah, sure. मतलब वही, लाइक गेट स्टार्टेड विद समथिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम प्लानिंग कि कहाँ से स्टार्ट करना, जस्ट गेट स्टार्टेड विद व्हाट यू नो। Hmm. And I think if you तो मैं start अचानक से at, उसका, हाँ हाँ वो, you're saying कि like if you start off initially with roadmaps and all that, वो question में it's like given ना, you know I have to solve this question using this logic because like उसमें it's separated based on like patterns and things like that ना, so you aren't really even thinking about anything, like you know कि ये question में लिखा है कि binary search से ही करना है, so you'll have a clear cut idea कि हाँ भाई हाँ binary search, so there is no use in that ना, like if you didn't apply your own mind कि हाँ, like you should be able to see कि like ये question है तो I think I can do this using binary search rather than knowing कि ये binary search का ही question है. यस एग्जैक्टली, मतलब यू नो वो क्वेश्चन कौन सा, मतलब वो जो क्वेश्चन है उसमें क्या यूज होने वाला है, उसको फिगर आउट करना भी एक टास्क है कि हाँ ये क्वेश्चन बैक ट्रैकिंग का है, या क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है, या तो फिर ये नॉर्मल टू पॉइंटर्स या स्लाइडिंग विंडो का है क्वेश्चन। तो वो फिगर आउट करना कि ये क्वेश्चन कौन सा इसमें आएगा, Hmm. इसलिए उसके लिए यू नीड टू सॉल्व मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चन सो दैट यू कैन क्लासीफाई कि हाँ ये क्वेश्चन किस टाइप का है। Hmm. लाइक वो क्लासीफाई करने में भी लाइक जल्दी क्लासीफाई नहीं कर पाते हो, मतलब हाँ मैं भी नहीं कर पाती थी क्लासीफाई कि ये कर क्वेश्चन कौन से टाइप के, क्योंकि एरेज में ही कितने सब टॉपिक्स है, राइट? लाइक हाँ हाँ टू पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो। सब अरेज तो फिर वाली. वही, तो या मैंने स्क्रीन शेयर किया है। So she's sharing a lead code thing. You can share your profile page as well for people who want to see कि कितना streak बनाना है and then how. अरे मैंने तो अभी न्यू ईयर के लिए मैंने अभी लाइक स्ट्रीक शुरू किया है, फ्रॉम न्यू ईयर। That's उसके something पहले तो मैंने बंद कर दिया था इसका माइक्रोसॉफ्ट में हो गया. आफ्टर गेटिंग इंटर्नशिप। शी स्टिल डूइंग क्वेश्चन, तो यहाँ कुछ हुआ नहीं है देन पीपल लीव इट कि बस हो गया डीएस से. अरे अरे नहीं, मैंने 2-3 महीने कुछ डीएसए किया है ना, लेट मी शो यू मेरे से वो ग्रीन कलर का। वो हो जाता है कभी कभी. आई थिंक दैट हैपेंड विद एवरी, इवन विद मी, लाइक आई रियली कंसिस्टेंट एट वन पॉइंट, फिर उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि लाइक वो एकदम से ऐसा बंद हो जाता है, तो लाइक 3 यू पीछे कैन रह. सी मेरे सबमिशंस, हाँ. लाइक जून जुलाई में आई डिड मेनी। हाँ, लाइक पूरा ग्रीन ग्रीन हुआ है। हाँ. फिर अगस्त में मैंने, आई गेस यहाँ तक, यहाँ पे मेरी वेल्स फार्गो लगी थी, उसके पहले मैंने किया था इतना, एंड देन फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के पहले मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया था, और फिर मैंने बाकी का पूरा छोड़ ही दिया था। यू कैन सी। So yeah, I won't recommend you this. I was like really irregular after like getting my internship, but I think like you should continue solving the essay. और फिर हाँ मैंने अभी शुरू किया। हाँ अभी फिर बन गया स्ट्रीक आज. एंड यस आई वुड से कि मैक्सिमम तुम लोग ना मीडियम क्वेश्चंस ट्राई करो, क्योंकि ना मीडियम क्वेश्चंस ही आते हैं ओवीस में। Wait, like if you look at लाइक Richa 218 questions, she's done medium. And easy is 115, hard इतना ज़्यादा नहीं किया. But even with नहीं medium, if किया। strong understanding, तो like वो अच्छी बात है. Like you can clear your round. हाँ लाइक मीडियम इज, आई वुड से कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग मीडियम का ही सॉल्व करो, क्योंकि मीडियम में मतलब वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं ओवीस में, स्पेशली जो बैंक के ओवीस होते हैं ना, हाँ तो हाँ. उसमें मीडियम लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं। सो Richa, मीडियम, talk about something. Can you show the audience ki like मान ले suppose you're a new coder, like if you can pick any problem and guide us through like in just like 1 or 2 minutes कि how should you solve the question, like नहीं आ रहा तो क्या करना, how much time should you wait, like what was your strategy, because उस पे अटके रह के भी फायदा नहीं है, and if you just copy paste the solution just for the sake of six, वो भी waste of time ही है. So if you can pick any question like two sum ही उठा ले, and then like because now you can use chat GPT वो सब भी है. हाँ two sum भी उठा लेगी तो भी चलेगा, like any question you can pick and then like show them कि तूने कैसे किया था, like how should folks. सो मतलब तो फिर लाइक पहले आई वाज लाइक आई वांटेड टू आंसर द क्वेश्चन कि कौन से टॉपिक्स करने हैं सॉल्व, हाँ. राइट? हम्म. कौन से टॉपिक से करने हैं। तो देखिए हम्म. यहाँ पे सबसे पहले एरेज एंड स्ट्रिंग्स, एक मिनट, हाँ, तो सबसे पहले एरे और स्ट्रिंग्स था। हम्म. तो सॉल्व ये क्वेश्चंस, लाइक अगर तुमने ये सॉल्व किया तो फिर उसके सिमिलर क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। हम्म. एक मतलब आई थिंक आई हैव स्लो, लाइक मेरा नेट चल नहीं रहा, या लाइक इफ यू सॉल्व दिस, हम्म. राइट, तो इसके जो सिमिलर क्वेश्चंस है ना, हाँ. वो भी सॉल्व करने का ट्राई करो, ये ओके. वाले क्वेश्चंस, हम्म. राइट?
लाइक सॉल्व दोस। एंड लाइक यहाँ पे सारे टॉपिक्स दिए हुए, लाइक हाँ। एरे स्ट्रिंग, टू पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, प्रीफिक्स सम। तो हम्म। मतलब ये एक एक टॉपिक तुम लोग मास्टर करते जाओ। लाइक जब तक तुम ये टॉपिक मास्टर ना कर लेते, तब तक तुम लोग उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब इवन लाइक यहाँ पे भी यू कैन, माय लाइक रियली स्लो, आई एम सॉरी। नॉट ओके। मतलब यहाँ पे भी ये होता है ना टाइप ऑफ क्वेश्चंस के, हाँ, कि यहाँ एरे स्ट्रिंग। पे करेक्ट, यू कैन सॉर्ट दैट तो आउट। लाइक जब तक तुम लोग वो मास्टर नहीं कर लेते हो टॉपिक, तो यहाँ से भी वो टॉपिक निकाल के लाइक सॉल्व दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हम्म। हाँ। और लेकिन इंटरव्यू में जो 75 टॉप क्वेश्चंस में जो भी टॉपिक्स दिए हाँ हुए हैं ना, आई हाँ थिंक उतने टॉपिक्स आर इनफ। मैंने तो ट्राई, वो ट्री या ट्राई क्या बोलते हाँ, हैं, ट्राई 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 बोलते हैं ना, ट्राई। ट्राई। मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया था। कुछ कुछ रहते हैं, इवन डेक डेक का टॉपिक भी बहुत बार आई डोंट थिंक दे आस्क, लाइक इन सम क्वेश्चन इसमें तो दिया भी नहीं है आई थिंक, बट यू कैन यूज योर डेक अप्रोच आई थिंक इन राउंड टेबल वाला क्वेश्चन। थिंक दैट वाज इवन आस्क्ड इन माइक्रो, हम्म। ओ राउंड टेबल रोटेशन समथिंग कुछ कौन था। सा वाला क्वेश्चन? द राउंड टेबल वाला था ना कुछ की, लाइक ओ हाँ, राउंड टेबल, यस। के प्लेसेस आई थिंक राउंड टेबल में द गेम वन, लाइक उसमें वो गेम की लाइक के पर्सन आउट हो जाता है एंड देन यू हैव टू टेल वो विच। जोसेफस प्रॉब्लम वाला है ना। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। जोसेफस प्रॉब्लम है ना वो, हाँ हाँ हाँ, लाइक वही। बंदूक वाला, लाइक किलिंग वाला गेम। हाँ वही है आई आई थिंक। थिंक वही है ना। हाँ हाँ वही हाँ, है। वो जोसेफस प्रॉब्लम से लाइक इवन वैसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मैंने भी देखा आते हैं। ओके। तो लाइक एंड हाँ, ये सारे टॉपिक्स जो है ना, ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स तुम लोग सॉल्व कर लो जो इसमें है, ओके। राइट। और इसमें कभी जितने भी टॉपिक टॉपिक्स है जो वो आप सारे सॉल्व करो। like if there's some topic you're not क्या? able to solve the question, like if there's some topic यहाँ पे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, like did you give a lot of time to the question, क्योंकि बहुत लोग छोड़ देते हैं, लाइक ठीक है आधा एक घंटा दे दिया। हाँ, फिर फॉर question एग्जाम्पल, हाँ अब फॉर एग्जाम्पल अब मैंने मतलब एक क्वेश्चन लिया मैंने, राइट। मुझे वो सॉल्व करते नहीं आ रहे। हाँ हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं स्लाइडिंग विंडो लिया है, मुझे वो सॉल्व करते नहीं आ रहा है। मैंने वो फिर क्वेश्चन मैं लाइक आई डू यूट्यूब सर्च वो क्वेश्चन को, एंड हम्म, देन आई वॉच जैसे 2-3 वीडियोस ऑन दैट क्वेश्चन ओनली। स्ट्राइवर्स के, या तो फिर कोड हाँ के, या तो फिर आई गेस वो कोडिंग विथ निक भी एक चैनल है हाँ कोडिंग विद। उसका। एक हाँ, तो हाँ सारे मैं सोल्यूशंस देख लेती हूँ जब तक मुझे वो क्वेश्चन समझ ना पाए, ओके। राइट। हाँ, एंड देन फिर उसके मतलब फिर से टू लाइक टू टेस्ट योरसेल्फ, हम्म। सॉल्व द सिमिलर क्वेश्चंस जो नीचे दिए हुए हैं। ओके, तो ऋचा का आई थिंक मोटो अभी मतलब कि लाइक तोड़ेंगे नहीं तब तक, अरे क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना, जब तक फोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, इट वाज दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कि हैव टू वर्क ऑन द क्वेश्चन टिल यू डोंट एक्चुअली टू द सोल्यूशन। एंड एंड लाइक रीड ऐसे काफी ऐसे हैकर रैंक पे होते हैं ना, कि लाइक हाँ, योर हम्म। माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस, या तो फिर क्वेश्चंस दैट वाज ऐसे हाँ आस्क्ड इन किसी और के ओवेज में, सो ट्राई सॉल्विंग दोस टू। एंड ऐसे लाइक तुम लोग यूट्यूब पे देखते रहो कि लोगों के ओवेज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड ट्राई सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस एज वेल, एंड उसके सिमिलर क्वेश्चंस टू। इवन अभी ऑन मतलब मीडियम, मीडियम पे भी रहते हैं ना, देयर आर लॉट ऑफ ब्लॉग्स फॉर डिफरेंट टॉपिक्स एंड लॉट ऑफ पीपल टेल देयर एक्सपीरियंस की लाइक वी आई गिव एन इंटरव्यू फॉर दिस कंपनी दैट कंपनी, सो यू कैन आल्सो चेक दोस आउट इफ यू हैव टाइम। हाँ, एग्जैक्टली, लाइक यू शुड चेक ऐसे बाकी के यूट्यूब वीडियोस भी, कि सो दैट यू अंडरस्टैंड कि मतलब हाँ, कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड ऑल्सो व्हाट वाज आई गोना से, हाँ, फॉर एग्जांपल डायनामिक प्रोग्रामिंग, आई वाज कंप्लीटली न्यू विद डायनामिक प्रोग्रामिंग, तो वो मैं ऐसे एक क्वेश्चन के थ्रू सीख भी नहीं पाऊंगी, राइट, डायनामिक प्रोग्रामिंग। करेक्ट। तो फिर मैंने डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए आई स्टार्टेड विद आदित्य वर्मा वीडियोस, या ओके। आदित्य वर्मा के मैंने वीडियोस देखे थे फॉर डायनामिक प्रोग्रामिंग। क्योंकि देख, जो इजी, लाइक फॉर एग्जांपल तुमको अभी एरेज और स्ट्रिंग्स आता है, सो यू कैन लर्न थ्रू क्वेश्चंस टॉपिक्स लाइक क्या बोलते हैं, वही स्लाइडिंग विंडोज एंड टू हम्म। पॉइंटर अप्रोच, यू कैन लर्न दोस कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस। लेकिन जो लाइक कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट है, लाइक लिंक लिस्ट ट्रीज, क्या बोलते हैं, लिंक लिस्ट ट्रीज, रिकर्जन फॉर एग्जांपल, तो फिर ग्राफ्स, तो वो आई वुड से कि थोड़ा सा वीडियो देख लो एक दो, for like knowing basic concept of those, and then we try solving those questions. लेकिन like what my way of solving question was कि learn the topic while solving that question. ओके। And अगर आपको आता नहीं solution, तो you can ऐसे see वो solution वाला साइट होता है हाँ ना, हाँ solution वाला टैब लीड कोड पे, तो तुम वो भी देखो, लेकिन make sure कि you end up understanding the solution, and अगर next time वो question आए तो you can solve that question.
Okay. So, Richa, now let's switch gears and talk about your internship experience because DSA, I think we've covered in a lot of detail, and logo ko they'll definitely get a clear understanding. So let's just start off with Microsoft was off campus, correct? So let's start off with could you Hmm. break down the entire process? की process क्या था? And then you can sort of explain each part in detail. कि ये वाले step में क्या हुआ? And then what was the next step? ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट के लिए मैंने अराउंड जून जुलाई अप्लाई किया था। इसके लिए मैंने अप्लाई किया था ऑफ कैंपस माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल्स पे ही यूजिंग रेफरल। तो एक सीनियर थी हमारी, शी गेव अस रेफरल, तो बाय यूजिंग रेफरल मैंने वो अप्लाई किया था। एंड Oh, देन उसके बाद मुझे अराउंड आई गेस सितंबर सितंबर के अराउंड आई hmm, गॉट सिलेक्टेड, वो रेज्यूमे सिलेक्ट हो गया। hmm, फिर उसके बाद आई गॉट द टेस्ट लिंक सितंबर में, एंड टेस्ट फिर मेरा क्वालिफाई हुआ था। एंड लाइक 2 वीक्स बिफोर माई इंटरव्यू मुझे मतलब मेल आया था कि यू गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। एंड अक्टूबर एंड को मेरा इंटरव्यू थे, और एक ही दिन में दोनों इंटरव्यू हुए थे। लाइक माई फर्स्ट इंटरव्यू वॉज अराउंड 10 एंड सेकंड इंटरव्यू वॉज अराउंड 12:30 उसी दिन। सो आफ्टर माई फर्स्ट इंटरव्यू आई गॉट कॉल फॉर सेकंड इंटरव्यू विद इन 1 आवर, एंड देन फिर सेकंड इंटरव्यू हो गया, एंड देन नेक्स्ट डे मुझे रिजल्ट अनाउंस हो गया था okay. फॉर माइक्रोसॉफ्ट। Oh, तो लाइक द राउंड्स वेर resume screening, फिर online assessment, and then 2 rounds of interview, okay. and that like lasted around 45 to 1 hour. Okay. Now that you 45. talked about resume, can you show your resume? That would be good because a lot of people have the doubt like resume में क्या डालना चाहिए, what sort of projects do you need, what sort of profile do you need. So yeah, if you can open your resume and sort of show people ki like how was your resume basically. Okay, yes. तो फिर आई थिंक ये फॉर्मेट में, सो ये तो रेज्यूमे मैंने अपडेट किया, बट इन दिस फॉर्मेट आई सबमिटेड माइक्रोसॉफ्ट का रेज्यूमे। Okay. यस। Hmm. एंड ये जो फॉर्मेट था दिस वाज गिवन बाय आवर कॉलेज। सो फॉर माय वेल्स फार्गो इंटर्नशिप मैंने ये रेज्यूमे डाला था क्योंकि दिस वाज गिवन बाय आवर कॉलेज। Okay. एंड वही लाइक नॉर्मल जैसे रेज्यूमे में होता है, फर्स्ट एजुकेशन, फिर योर Hmm. स्किल्स, फिर प्रोजेक्ट्स, फिर अचीवमेंट्स, एंड देन अगर तुम किसी क्लब के पार्ट हो तो यू कैन ऐड दैट। सो वही तुम लोग करो। एंड इफ टॉकिंग अबाउट लाइक इफ यू वांट टू टॉक अबाउट प्रोजेक्ट्स, राइट, तो आई वुड से 3 प्रोजेक्ट्स आर इनफ। ट्राई एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट जिसमें तुम्हारा डीबीएमएस भी आ जाए। Hmm. यस। Hmm. सेकेंडली ट्राई एमएल, इफ यू हैव एमएल एज अ सब्जेक्ट एंड तुमने डाला है इन योर स्किल्स की यू नो एमएल, तो एक एमएल का प्रोजेक्ट डालो। एंड एक इसका प्रोजेक्ट डालो, किसका, डीएसए का प्रोजेक्ट, लेकिन अच्छा डीएसए का प्रोजेक्ट होना चाहिए, नॉट लाइक ऐसे क्या बोलते हैं, हाँ 200 लाइन्स ऑफ कोर्स तुम लोग ई फाइल्स करके, लाइक एनी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, डोंट डू दैट। हाँ. दैट्स लाइक रियली कॉमन। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स and think some unique topics. Don't do that management system using JDBC. That's actually common. Hmm. मतलब वो सभी करते हैं। Like So even मेरा, to be honest, ये जो मेरा project है loan approval prediction, that was quite of like that's quite common. I would agree with it. हाँ. लेकिन I think like दूसरे projects were kind of unique, Hmm. or maybe yes. नहीं, Hmm. दे आर यूनिक अदर वन लोन अप्रूवल इज आल्सो लाइक कुछ लोग करते हैं बट इट्स नॉट दैट प्रेवलेंट कि ऐसा नहीं कि हर आदमी कर रहा है लाइक जो क्लोन एप्स आई थिंक लिंक्डइन पे भी सर्च लाइक हर दूसरा आदमी कर रहा होगा वो Amazon हाँ क्लोन हाँ true. उसका क्लोन यू विल And एंड अप बिकमिंग अ you know, क्लोन. hmm. And like LinkedIn पे और फिर WhatsApp पे you end up getting ऐसे काफी messages कि 3,000 में तुम्हें ये इंटर्नशिप करके मिलेगा वगैरह वगैरह। हाँ. So you get right. I don't believe in that. मैंने भी किया था ऐसा। ये जो था ये मैंने भी किया था, लेकिन I don't think that's like quite impactful. हाँ. अब उससे कुछ होता नहीं है। Yes. लेट्स नॉट गो इनटू दैट वरना उनका कार्टेल खड़ा हो जाएगा. They are big cartel. They'll be like, so we won't name any companies, but I think you understood what we're. I got it. I got it. Yeah. And हाँ something you can notice is that Richa ke like in the resume, you can see that projects and achievements. They are the things that are standing out the most, and उसमें most detail डाला उसने. Before that, education and all that, that is fine, that is common. And then she's also mentioned proficient and familiar with. That is something I feel is really important because लोग कुछ भी डाल देते हैं. They just like randomly put कि like if they've just like written 100 lines of HTML, they'll be like I'm a master at HTML. So this is something that I think is it really important so they get an idea ki like she's familiar with this with JavaScript, Python and all that, but she is proficient with these other languages, and that basically shows your हाँ। honesty na, कि you're not like कि मेरे को सब आता है. That is not what she did. She And mentioned like बहुत मत डालो रे
यस यस एंड आई वुड से कि लाइक बहुत मत डालो लाइक ऐसे व्हाट वी से ऐसे डोंट यूज समथिंग ऐसे डिफरेंट वर्ड जो समझ ही नहीं आया कभी किसी को लाइक यूज सिंपल वर्ड्स लाइक हम्म, डोंट कॉम्प्लिकेट योर रेज्यूमे ऐसे एक बार पढ़ के समझना आना चाहिए लाइक से बढ़ा चढ़ा के मत बनाओ रेज्यूमे राइट हाँ, लाइक कीप इट सिंपल like what you do on LinkedIn, like टू द पॉइंट something small, they write an entire paragraph. So yeah, that's something important, right? What you have done. या Yeah. लाइक मैंने एक मीम देखा था लाइक हाउ डू दे से डिस्क्राइब कि मैंने लाइट बल्ब लगाया है ऑन हाँ, रेज्यूमे correct, correct. क्या सिंगल हैंडेडली लाइक ऐसे Deployed, कुछ तो लिखा था आई deployed डोंट the क्वाइट light bulb, वैसे कुछ तो लिखा था, I think I've seen. डिप्लॉयड luminous emitting हाँ, object वैसे like नहीं, so don't fancy up your resume keep it simple ना keep it and simple. keep it true हाँ, like keep it don't ऐसे कुछ something मत लिखो important yeah because like keep it कुछ भी simple नहीं लिखना है. Like what you have done, you should write that because if you do that one time, I don't think any company is gonna come to you if you have all if you do such a fraud, and that's not ethically not correct. Na? कि like it's like increasing true your and like if knowledge, like sort of like that. mm-hmm. and true and if you want to ऐसे like दिखाना है अपना resume भरा होगा so I would say कि और एक प्रोजेक्ट बना लो 4 प्रोजेक्ट डालो जैसे मैंने डाला है so that भरा हुआ लगे resume and क्या बोलते हैं and the description थोड़ा सा बड़ा डाल दो like if you want कि तुम्हारा थोड़ा सा resume बड़ा दिखे करके like भरा हुआ दिखे हाँ, अगर तो हाँ. And I don't think you right have to go into like that that's a pro tip कि like वो बड़ा करने के लिए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, they don't want to do anything because if you look at Richard's project they're also unique. ऐसा I haven't seen a lot of projects that are totally unique because उसने बड़ा करने के लिए she wanted to develop something, उसके पास आइडिया कुछ तो आया, she thought about it and then she went on developing. ऐसा नहीं कि भाई रेज्यूमे के लिए मैं कर रहा हूँ because if you do stuff for resume I don't think you're gonna go anywhere. That is what I personally feel. मैंने like हाँ. आई थिंक मैंने लाइक अराउंड ऐसे 7-8 प्रोजेक्ट्स बनाए लाइक नहीं 7-8 नहीं ज्यादा बोल दी 6-7 प्रोजेक्ट्स बनाए थे हम्म, एंड देन फिर आई शॉर्ट लिस्टेड योर 4 एंड लाइक इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम मेकिंग योर प्रोजेक्ट्स जो तुम्हारे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स है राइट हाँ. जस्ट एनहांस दैट प्रोजेक्ट्स उसको और अच्छा बनाओ वो प्रोजेक्ट्स को एंड वो डालो Okay. like if you ऐसे give 100% your college projects and your open-ended assignments that helps too मतलब तुमने अगर वो भी डाल दे तो it works really good Okay. You can unshare your screen now because I think people have understood कि how should your resume mentioned the rounds that occurred in the Microsoft interview. So could you break that further down? Ki, like what was asked in the OA round, what sort of questions were asked in DSA, and especially about the technical round and the HR round. If there was any HR round, what was your experience and what were your learnings? तो फिर like there was no HR round there were only 2 technical rounds for interview and in OA there was a simple array question and the second question was on dynamic programming 2D dynamic programming so like the array question was really easy yeah and the dynamic programming was like I did recursion and then I did memorization on that so I would rate those questions like medium level lead code yes and in like first technical round they asked me question on DBMS Okay. like query लिखने बोला था DBMS का I couldn't ऐसे properly solve that query to be honest Oh, yeah and फिर एक oops का question पूछा था about exception handling then he gave me a situation कि हाँ इस situation में which data structure would you use and why and like उसका time complexity space complexity उसका like the answer was heap priority queue max heap था तो फिर like मैंने in detail में उसके बारे में पूछा था मुझे and then one coding question which was what was that question number of trailing zeros in factorial वाला question था I think that was lead code medium question जो मुझे interview में पूछा था mm, so like he made me share my screen and solve करने बोला था on the spot so okay. I think interview में right you should ऐसे think out loud मतलब जो तुम लोग सोच रहे हो like तुम वो बोल के सोचो so like the interviewer would know कि like what's your thinking process behind solving that question yes huh. and in the second interview question in the second interview the questions asked were एक problem पूछा था मुझे Oh, like write the code between like एक time दिया होगा like for example 3:15 mm, so write the code to know the angle between the minutes and the hour all ये right. our hands हाँ तो वो क्वेश्चन पूछा था तो that was like really easy and then बाद में मेरे resume का पूछा था about my projects Mm, हाँ I would also say जो तुम्हें projects आता है right like जो तूने projects डाले हैं make sure you know everything about that project क्योंकि projects के बारे में they ask even Microsoft asks
and system design पे पूछा था कि they asked me कि if you want to implement Google Drive kind of thing, how would you implement that? तो उस पे like I said, and then he cross questioned me. He cross questioned, for example, कि like what if more than two people are like accessing the same file and they're like editing the same file, so what would you do in that case? So like the answer is like you should implement synchronization and फिर उसके बारे में बोलो. Like another question was कि अगर बहुत बड़ी फाइल होगा, so लोड करने में टाइम जाएगा, राइट? सो हाउ वुड यू प्रिवेंट दैट? सो ऐसे क्वेश्चंस ही गेव मी, एंड ही इवन आस्क्ड अबाउट ट्रीज एंड ग्राफ के इजी क्वेश्चंस पूछे थे मुझे. दैट्स इट. Okay. So thinking out loud is the main thing that you should do, because a lot of times you know the solution, like तेरे को आता है कि like this is what I did, but you can't explain the solution. तो फिर like there's no use of. नहीं, फन फैक्ट, वो जो ट्रेलिंग जीरोस वाला क्वेश्चन था, राइट, मैंने वो हॉलीडेज में सॉल्व किया था, एंड आई न्यू द क्वेश्चन, एंड लाइक आई रिमेम्बर द सोल्यूशन क्योंकि मैंने उसमें बहुत टाइम डाला था, सो आई न्यू कि कैसे सॉल्व करते वो क्वेश्चन को, एंड लाइक आई वाज शोइंग कि हाँ मुझे आता नहीं है वो आंसर सॉल्व करना, लाइक आई वाज प्रिटेंडिंग कि हाँ आई एम थिंकिंग हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इवन दो आई न्यू द सोल्यूशन. Okay, that was probably mentor zindagi wala moment where you know the solution but you're just acting like you don't. I don't know if you should have mentioned that, just in case the people watch this podcast, the Microsoft folks. Okay. अरे लाइक आई थिंक दैट्स व्हाई आई सेड, राइट, कि यू शुड सॉल्व मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कभी ना कभी वो क्वेश्चंस काम में आता ही है, लाइक Hmm. वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं ना इन ओएस एंड इन So इंटरव्यूज. satisfaction would be at the another level, no? Like even when that happens in the paper, it's like so big, and then if that happens in an internship, and you're like, I know this solution so well, so then it's a big confidence boost because you know, ki like, I've done this. नहीं लेकिन आई सॉल्व दैट क्वेश्चन से 3 4 5 months बैक, फिर भी हमको याद था, सो There are some questions द like that. सॉल्यूशन. And guys, this is how you should solve DSA. कि like 3-4 महीने बाद भी you should know the solution. Like this is not some college exam की याद किया and then जैसे ही पेपर खत्म, और भूल जाना, don't know anything, bro. You shouldn't be like क्योंकि that. आई रिमेम्बर, क्योंकि आई रिमेम्बर वो क्वेश्चन पे आई हैड लाइक ऐसे मैंने 1 घंटा डाला था, 1 and 1.5 hours थिंकिंग ऑन द सॉल्यूशन कि कैसा होगा इन द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे. Hmm. सो इसलिए लाइक वही, लाइक एज आई सेड अर्लियर कि वो क्वेश्चन तब तक सॉल्व करते जब तब तक तुम्हें वो अच्छे से समझ ना आए, and like the next time you get that question, you must be able to solve that question. So like that's the main point of solving DSA, and like seeing the solution, or yeah. Okay. So the main things are DBMS, operating system, and system design was also asked. And then especially your projects, because they want to know in detail ki, like, have you actually built the project, or is it some sort of copy pasta or copy paste sort of project where you've just copied using ChatGPT? They don't want to see such sort of projects, and then they can really judge you. Na, they have so much experience. Mm-hmm. And how can you leverage the interviewer? Because a lot of people go, they're like, interviewer are our enemies, ki, like they're here to make fun of us. And that's not usually the case in big companies, because they're also, what I've heard with all my guests so far, ki, they're also very supportive, because they're there to judge you. They're not there, they're not your like teacher, no offense, but they're not your teacher ki, like they're there to like make you feel bad. They're moreover there to like actually get the best out of you, because they're searching for an employee, right? And if they're able to see the best of you, then they're gonna hire you. So did you leverage that, or were you like really nervous? Because a lot of people are really nervous, like they're just scared after seeing the interviewer's face. uh like even in my Wells Fargo's first round, it was online, and face मेरे को दिखा नहीं. Even in Microsoft first round, the interview didn't show his face. Okay. Yeah. So like interviewers like are like really chill people. They're not like Viva के teachers and externals की ऐसे they like demotivate you करके. Interviewers are like really chill and good person, like good people. And about interview, मतलब मैंने तो मतलब yeah, I think that's like pretty fine. They're chill, and I would say when they ask, right, if do you have any questions for me in the last? So they'll do ask questions. Do ask questions. Like make sure that the interviewer sees the passionate, The passion. the great and the passion you have for working in their company. And agar if you couldn't answer the question, it's fine. But yeah, interviewer would explain you the solution and make sure you listen to it attentively. Like say, like make sure you're open to learning new stuff, I would say. Okay. Yeah, that's pretty important, because like even if you fail, And you. and I would say ki uh
you should control your interview. मतलब तुम ऐसे hints डालो in the question कि जिसका आंसर तुम्हें like कि the next question he would ask is about that thing that you mentioned earlier. So ऐसे plan your interview. When you answer any question, make sure you give the hint for the next question he would ask or she would ask. Okay. Yeah. So like you should control your own interview. Did you plan this before the interview, or is it something that just happened in the interview? Like, did you plan all of this? I नहीं, ये तो मैंने वाइवा में सीखा था. अच्छा, okay. Like the college vibes की, हाँ. And also like in your introduction तुम लोग introduction like when you introduce yourself ऐसे ही points तुम लोग डालो introduction में कि अगला question वही आए. For example ये मेरा नहीं, it's my friends, ये तो फिर उसने डाला था अपने introduction में कि she loves solving sudoku. So obviously the next question he would ask कि can you like design a sudoku solver, and वो Lead code question ना? Lead code पे भी है. There's a 9x9 Sudoku. Can you solve that question? Okay. like how would you Okay. implement a Sudoku solver? That would be like obviously that would be the next question if you add that in your resume, in your introduction. So yeah. It sounds sort of like cricket where you're planning like mental stuff, like you're slashing the opponent into doing stuff. And that's a good thing. Like you can also utilize psychology. People usually don't do that. But that's really a good sort of, it's a mental sort of thing, right? Like you're controlling the interview, like even in cricket or if you're playing some sport, you have to dominate. Like what even Kobe Bryant and folks like that did. There's some people that are really good. This I've heard this in a podcast. There's some people that are there to like do good, and there's some people that are like the top 1%. They're there to dominate. So they don't care if they're winning like 10 games in a row. That's not their goal. Their goal is to dominate. So you should have that sort of dominating mentality. And like Richa gave some tips on how you can control the interview. You shouldn't be like the interviewer shouldn't be controlling it, right? Though they will ask questions, but you can somehow control the interview and sort of show your confidence to them. Is what I mean. And it is okay to say no in the interview. Ki, haan, like I don't know the solution of this question, but try to answer something or else. Like you at least like the interviewer sees ki you're at least trying your best. And yes, like in my Wells Fargo, I couldn't answer like say 2-3 questions out of say 7-8 questions. I couldn't, but then that's fine. I would say. So like सबके साथ होता ही. Okay. So can you shed some light on the Well Fargo's thing, like regarding the sort of questions? Were there similar topics that were asked, and is there any learning that you gained from Well Fargo's? Because that was before, right? You did Well Fargo's internship you got before Microsoft. So was there any learning from the Well Fargo's interview that helped you out in the Microsoft interview? हाँ, Wells Fargo, like there was this question in Wells Fargo which was asked to me जो मुझे आया नहीं था तब, like I ऐसे messed up that answer, but वो same question मुझे Microsoft में पूछा तो I could answer it there क्योंकि मुझे like I knew the solution. I think that was कि what if like a 1 GB file was uploaded, so like how would you handle it? क्योंकि you cannot load 1 GB file easily on your computer, right, in your PC, so how would you manage that? So like I answered that in my Microsoft interview then. But my like Wells Fargo, it was my first interview, so I was like really nervous. But the interview actually went well. Like the questions asked to me was like in my boundary, in my boundary. से नहीं कि कुछ और ही पूछ लिया था. So yeah, in Wells Fargo, they asked me about software development life cycle, about DSA, about OOPS. मतलब like the question they asked me कि पहले एक DSA का question दिया था, and then he was like implement abstraction on that DSA question, and then फिर abstraction and inheritance में in depth घुसा था, like in depth गया था वो. Yeah. And then he asked about PostGate methods, HTTP and HTTPS का फर्क. And then he was like what's like the best sorting algorithm you would say, and like how would you implement that algorithm? Like I said merge sort, and then I wrote the code. And then he asked me what is DevOps? What are like the top 5 Indian startups? Okay. What was your answer? Like if you remember. Yeah, like top 5 Indian startups, I said Flipkart, Zomato, Swiggy, Zepto. Yes. So yeah, and then he I am in FISOC, in the finance club, right? And Wells Fargo is a bank. So he was like, why FISOC? Like what interests you in finance and all that stuff. And he some questions are like really vague, like you would never expect that coming. Like DevOps, like I am like development and operation, and I'm like it's a process, it's a flow of how like the project is made.
So like he was like quite okay with that answer. And then he asked me what is cache, what is RAM, what is ROM, Yeah. that too. Then he asked me about Java collection framework in the the Java memory management, string memory management in Java, and Java and garbage collection in Java. So those were the questions he asked me to. So yes. So like what I would say, like first give priority to DSA, then give priority to OOPS, then give priority to DBMS, and then OS and computer networks. Like Okay. if you do the top three, which is uh, DSA, OOPS, and DBMS, and little bit of OS, I think like you're good to go for like at least for the internship interviews. Okay. And how did And you yeah, like go on? oh yes, and in short, like Wells Fargo interview was first online assessment, which was in the college itself, and three rounds of interview. First two were technical and HR. Okay. So you've talked that like you're good at DSA, so that's clear that you're able to clear the DSA round. But some other questions that were asked in overall in both interviews, they weren't really something that you could just think out of the top of your head, right? Like the GB thing and some other questions that you mentioned. So how should one go about preparing that? And when you were preparing for these other stuff like system design, DBMS, OOP, was your main motto getting an internship? Was that why you were studying that? Or like it was just like you're studying these subjects to sort of get your concepts clear? And how should one like, if you could briefly explain, how should they study these subjects apart from DSA, because they're sort of theoretical, right? And you have to have some sort of Which sub other which subjects? the core subjects like DBMS and all that. ENTC core or Mm. computer core? Okay. Hmm. Yes. So like DSA, I love DSA. So in DSA में तो मेरा खुद का personal interest था. And oops, I kind of like it was like I was studying it from the second year, so I kind of like that subject too. DBMS हमें like we didn't have it the curriculum. So DBMS के मैंने बस basics की थी like the top questions की acid properties, normalization वगैरह. Like I did those top basic topics and SQL का जो ये होता है what we say um, Query. क्या I'm not क्या Query. या एसक्यूएल का जो क्वेरी होता है तो मैंने उसका लाइक आई डिड प्रैक्टिस दैट इन लीड कोड इटसेल्फ लीड कोड में है एसक्यूएल का भी लाइक एसक्यूएल Top 50, हाँ. यस तो मैंने एसक्यूएल के क्वेरीज से अराउंड 30-40 सॉल्व किए थे एंड आई सॉल्व थोड़े क्वेरीज फ्रॉम हैकररैंक एज वेल सो या दैट्स व्हाट आई डिड फॉर एचटीएमएल सॉरी फॉर एसक्यूएल माय बैड या दैट्स ऑल Okay. And what about system design? Like, did you study that separately, the system design part? हमें सिस्टम डिजाइन था करिकुलम में सो लाइक Nice. इन फोर्थ सेमेस्टर वी हैड oops तो फिर oops में वी हैड सिस्टम डिजाइन टू लाइक उसके टाइप सिंगलटन पसार प्रॉक्सी बिहेवियरल वो सब कुछ था हमें हमारे करिकुलम में सो उतना ही पढ़ा था मैंने नॉट मोर देन Okay. And for the folks that don't have all this in the curriculum, ये अलग से पढ़ना है. It's not like you are gonna depend on the नहीं curriculum. What do you say? आई डोंट थिंक दैट स्टफ आई Hmm. थिंक लाइक सिस्टम डिजाइन में बस वही नहीं आता है लाइक एवरीथिंग दैट यू नो मतलब अभी डीबीएमएस भी आएगा ही ना इन सिस्टम डिजाइन लाइक Yeah. वो सब कुछ ही ये होता है दे डोंट से कि ये कौन सा सिस्टम डिजाइन में आता है दे सेड कि हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट इट Hmm. सो आई थिंक दैट्स लाइक Okay. So what Richard is saying that they सॉरी are practical stuff. So it's important to like not only know their concept but also know their applications, because she also said that RAM and cache के बारे में which she also had some questions. So you should hmm. overall know this like fundamentals in of the subject. हाँ yes I would say कि like बैठा है right instead of like watching something else watch like top 50 like top oops interview questions or like top dbms interview questions that really helps you Um, just like videos and just see the answers yeah mm. that And that's helps something important, right? Because like padhai, to I think everyone's doing that. Everyone knows those basics. But this is the extra sort of 1% that you have to do. You have to go the extra mile, na? Ki instead of actually watching Instagram reels or I don't know, playing some video games for like 1 or 2 hours, you can also get to learn about this stuff. And then subconsciously वो fit हो जाता है ना mind में, because you've seen so much हाँ that ki like वो manifestation ही हो जाता है kind of. Not specifically manifestation, but like you have an idea ना, because you've seen so much content, you know कि ऐसा question आ सकता है, and then you're sort of well hmm. prepared rather than just preparing for the interview. like for example जो garbage collection in java या तो फिर memory management in java like you get to know कि ऐसे questions पूछ सकते हैं by watching such types of video Hmm. Okay. So I wanted to talk about what are your future plans now? Because abhi to we've talked about everything.
Like you've also taken part in a lot of clubs, and I think what are some you must have learned some lessons, right? Like people management and yourself. You're in the finance club, you said, right? So in the finance club, I think that's also important because you're getting money. You have to invest that. You can't just randomly put it in some chit fund or something like that. So yeah, what were your learnings from your clubs and all that? And what are your future goals? What do you aspire to be? And yeah, So I think like the most like the like one of the important clubs that I am in is Spice of Finance Club, and like I personally have interest in finance. I'll be honest. okay, So yes, like finance club did help me because like if you sit for banks, they'll be like, ki, huh, tell me what you did in your finance club and why finance, right? So that kind of helps. And I think like club helps you to build your overall personality, right? You get to meet new people, you get to know new perspective of how do they solve things and how are like people around you. So clubs do play an important role, and why clubs, like apart from all the theory that they ask from us, the interviewer asks from us, you can also have a regular talk like about clubs or about any extracurricular that you do. Like what if even he or she has the same interest of like of the club you are in? Like what if he or she has interest in finance? You can have a uh Lashan. brief topic in a brief discussion about finance or AI. Like I was in AI club to AICBS. I am in entrepreneurship club too. I am in like DSA club Okay, right now. yeah. So like you can have as a conversation apart from all the questions they ask. So like the interviewer, he or she is like कि हाँ I like they remember us कि हाँ इनसे like इससे बात हुई थी मेरी इस टॉपिक के बारे में. So like make sure you leave an impact on that interviewer too. So I think like जो ये extra discussion होती है, right, apart from all the interview questions, even that is important, and even that plays a role because like mostly in banks they they don't want कि तुम बस ऐसे हाँ, DSA इसमें you top. They even want ki like how well do you manage stuff and how well do you organize stuff and how well you are with the people and how well you communicate too. So bank mein you need everything as like in a package, not just कि हाँ पढ़ाई और कितना smart और कितना DSA solve करते हो कितना ये होता है. Like for like to achieve that higher posts in banks you need the rest soft skills. So I think that's why clubs are important. and the folks running behind money, bank wale, they give a good package, especially the quant companies that you hear 1 crore package in India here, there, Jane Street and all that. So the people that want to earn some money and like, yeah, not some money, earn a lot of money, they can dive into that a bit. I think like I would want say my future to be in finance a bit, but not quite in finance. But yeah, technology is Yeah. would be there, and I'm not planning any say masters or MBA right now. Let's see what the future holds for me. The role. Because you've already done like commendable stuff already. So like a lot of people do masters because they weren't able to achieve what they want, but some people are there that actually want to do PhDs and all that Hmm. because they've done all the hard work in over the 3 years. I don't know if you want to really grind on that pattern. So in short, be a all rounder. Being an all rounder is something that is important now because they don't want robots, right? Like if you talk about Yeah, exactly. GPT, I think recently had a rating of 2000. What was it? 2750 on Code Forces. It was able to achieve that. The latest model of Chat. Oh, So even that's Chat impressive. even ChatGPT can do that. For the folks that think that ChatGPT can replace you, but the only part that keeps you different is your personality and overall how you interact with folks, right? Because at the end of the day, you're And not. be interactive. They're not. You're not a Yeah, robot. You're a human. If you start doing that, you'll end up being like a. just Uh, mm-hmm. Like just don't make like interview one way ki हाँ that the interview is asking us question and just answering the question. Make sure you engage in the conversation with the interviewer. That's important. mm. Yeah. And I think you can learn that from friends. Like Richard mentioned, uska friend group. It was a really good, highly motivated friend group because a study says that the your personality is governed. Like 90% of your personality is governed by the top 5 people you interact with the most. So get a good friend circle, get a good life, get a good job, and yeah, that's the motto of this podcast. So thank you so much, Richa, for coming on this podcast. This was really a great experience. It was like the chillest podcast. I forgot we're in a podcast after some point. It felt like I'm talking to a friend. I don't even talk to my friends that much, to be really honest. But yeah, it felt like a more of like a conversation, and that is what sets podcast apart from interviews. So, is there some final message that you want to tell the audience, or you feel like कि बस बहुत हो गया, बहुत we've talked too much? Yeah, I do talk too much. Like thank you for like keeping up with me. Like मैं flow में I like मैं बहुत ऐसे ज्ञान देती हूँ. My bad.
Mhm. So I would say कि ऐसे मत कि बस पढ़ाई पढ़ाई करो, keep chill, be chill with your life, yeah, but don't stop studying. Like you can manage both of them, right? Like Correct. be consistent, be passionate, but do have a life too and have fun also. Yeah, be a So chill person don't be in a robot. end. Be the one that makes the robot. Don't be a robot yourself. Okay. So yeah, Yeah, thank. but ऐसे मत कि पढ़ना बंद करो. हाँ Chill doesn't mean कि कुछ नहीं कर रहे. For the chill means हाँ you're doing stuff. Like be like Rohit Sharma. Like he's still on the field. We know how he is. Like he's really chill on the field, but he knows what he's doing, right? So that's the sort of person. Be serious while you're studying, but apart from that, Hmm. you can be free and do stuff. And yeah, so thank you so much. And guys, you can check out. I'll share Richard's LinkedIn account. If anyone has any doubts, they can directly DM her. I'll share my channel's LinkedIn account, and yeah, you can connect with us. You can connect with her. You can check out my Instagram page, and hopefully, do give us some feedback. Like if you like the podcast, do tell that, and if you didn't like it, that would also be appreciated. So yeah, thank you so much.